everyone. How are you all? I, Sushmit, welcome you to the very first class of Guruji coaching classes. I am your mentor for English and we are going to begin with the topic the uses of a and the. I know सब लोग सोच रहे हैं मैम ये तो हमने बहुत छोटे में पढ़ा था and this is a very basic topic. I know this is a very basic topic but this topic is not going to leave your way till you even go for government exams. Yes, this is a very important topic in order with government exams. I am telling you it for the third time. This is a very important topic with respect to government exams. हम लोग ये सोचते हैं कि हमें यूजेस ऑफ ए एंड और द बहुत अच्छे से आते हैं बट एट टाइम्स व्हेन वी आर स्पीकिंग एंड व्हेन वी आर राइटिंग हम लोग बेसिक और छोटी छोटी सी मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई एम हियर टू क्लियर ऑल दोज मिस्टेक्स फ्रॉम योर माइंड एंड क्लियर द कॉन्सेप्ट्स यूजेस ऑफ ए एंड द. ओके, सो लेट्स बिगिन. Here. Okay, so first of all, we are going to begin with a and an. Okay, we are going to follow up with the uses of the later on. Okay, so for the uses of a and an, अभी तक हम लोगों को लगता था consonants के पीछे हम लोग a लगा देते हैं and vowels के पीछे हम लोग an लगा देते हैं. But is that really true? Let's see from the examples. Uniform. इसके सबसे फर्स्ट वर्ड है यू, राइट? कैन यू सी दिस? द फर्स्ट वेरी अल्फाबेट इज यू. लेकिन क्या इसके आगे हम लोगों को एंड लगाना है या फिर हमें इसके आगे अ लगाना है? लेट्स सी. दिस इज अ वॉवल. सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट कि वॉवल्स के पीछे तो एंड लगता है एंड कॉन्सोनेंट्स के पीछे अ लगता है. सो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चले तो हम लोग इसके आगे and लगा देंगे. But students, here is where we are wrong. हम लोग गलत जा रहे हैं. We have to look at the sound of the alphabet. Not really U is to be a vowel. We have to look at the sound. Okay? Now let's hear. Uniform. The first sound which enters my ear is of ya, not a U or something else that is a vowel. But या जो होता है या क्या है? या एक vowel तो नहीं है. It is not a vowel. It is actually a consonant. So इस word को हम किस तरह से relate करेंगे? We are going to take it as a consonant of course. तो हम लोग यहाँ पे अ लगाएंगे rather than applying an. Here is where हम लोग गलती करते हैं and this is a very general and basic mistake which everybody commits. So यहाँ पे आएगा a rather than an. Okay, so let's see. Okay. Now coming to my next example, unique. क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि यूनिक में हम ए लगाएं या फिर एन लगाएं? यस, यूनिक. तो पहली साउंड जो मेरे कान में आ रही है दैट इज ऑफ या रादर देन अ, यू, ई, ए और आई. सो वी आर गोइंग टू कंसीडर इट as a consonant sound, right? We are going to again consider it as a consonant sound. So, it will be covered as a unique. We are going to add a in the starting. And now coming to the next example, unicorn. Unicorn. Again, the first sound which comes to my ear is of ya. Ya. Yes? तो यूनिकॉर्न के आगे भी क्या आ जाएगा? अ रादर देन अप्लाइंग एन. आई अग्री कि यू इज ऑलवेज अ वॉवल, लेकिन जो साउंड आ रही है दैट इज ऑफ अ कॉन्सोनेंट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हम इसके आगे लगाने वाले हैं अ. ओके,
तो ये थे हमारे कुछ प्रीवियसली टेकन एग्जाम्पल्स, यूनिफॉर्म, यूनिकॉर्न। लेकिन अब मेरे पास एक नया एग्जाम्पल है, दैट इज अम्ब्रेला। अम्ब्रेला। तो यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है और यहाँ पे भी यू है, लेकिन इसके आगे क्या आएगा? इसके आगे एन आएगा, एन अम्ब्रेला। कैन यू टेल मी द रीजन एन क्यों आएगा? यस मैम, हमें इस वर्ड को बोलते हुए सबसे पहली आवाज आ की आ रही है रादर देन या की आ रही है। सो वी आर गोइंग टू कंसीडर इट as the sound of a vowel, sound of a vowel, and hence we are always going to put an with umbrella. Are you okay with it? Okay, now I hope the sound phenomena is clear to everyone. हम एन तभी लगाते हैं जब हमारे कानों में पहली आवाज आ की, ई की, यू की या आई की पड़ती है। लेकिन जहाँ पे हमारे कानों में पहली आवाज या की पड़ रही है, या की पड़ रही है या किसी और कॉन्सोनेंट की पड़ रही है, हम वहाँ पर एन कभी यूज नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू यूज आ बिफोर दैट वर्ड। Am I clear to everyone? Okay. Now, coming to the next very important part, the. The uses of the. Okay. Now, let's check out. देखते हैं ये the, जो कि एक बहुत कॉमन आर्टिकल है, वो कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम। ओके, लेट्स चेक आउट। क्या वो हम कंट्रीज के आगे यूज करते हैं? देखते हैं कुछ कंट्रीज के नाम लिख के। यूएसए, कैन वी कॉल इट आउट एज द यूएसए? लेट्स चेक आउट। ओके, इंडिया, कैन वी कॉल इट आउट एज द इंडिया? The first one is obviously correct. We can call the USA, but we can never ever call the India. This is completely incorrect. Why? Ma'am, दोनों ही तो countries के नाम हैं. Then why are we using the with USA and not using the with India? Now I'm going to give you the reason for it. Okay. USA is actually a group of countries. Okay, USA is a group of countries. However, India is itself a country. India is itself a country. So, with a country, we are never going to use the. Okay, we are never ever going to use the word the, and we are never ever going to use the with any country's name. Okay, taking the example of China, the China is completely a wrong sentence or a word, you can say. This is wrong. Okay, now coming to the part where we actually have to use the word the. Okay, ओके, सो रिवर्स के नाम लेते हुए क्या आपने कभी सुना है द गैंगस, द गैंगस, द यमुना, द कावेरी? यस, अगर सुना है तो इट इज रियली वेरी करेक्ट. वी ऑलवेज यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स. ओके, द गैंगस, द यमुना. Am I clear to everyone? Am I clear to everyone? And now coming to the next point that I have mentioned, newspapers के नाम से पहले
The Hindustan Times. The Hindustan Times, right? So we are always going to use the before the name of any newspaper. Okay. Now coming to the part classes. What are classes? Class 1, 2, 3, 4. Am I talking about those classes? No, students, if you're thinking that way, it is completely wrong. With classes, I mean to say classes like dogs, the horses. Okay, so this is a complete category. Okay, when we categorize something, we are always going to mention the before using that category. Okay, the is going to come before the dogs, the horses. Okay, now I'm going to tell you why and where we actually use the word the. Okay, so I'm going to take one example. This is a pen which was gifted to me by my mother. This is the pen which was gifted to me by my mother. Okay, and this is also a pen. This is a pen. Okay, now talking about this pen, I am going to say the pen was gifted to me okay, but for the another pen, whether I'm going to use the or something else, let's check out. Okay, a pen is there in my hand. So for this normal pen, I use the word a, but for this special pen, I use the word the. Could you find out any difference? Yes, students. When something is very much precious or something is very much special for us, something unique, something special, we are going to use the word the. But for normal things, we can always use a. Okay. So considering both the sentences correct, with this word pen, we can even use the and we can even use a. Okay. So it depends completely upon the sentence and the situation for what we are going to use this word. Okay. The situation is what is going to judge whether the is going to come over here or a is going to come over here. When we are talking about something which is very special to me, this pen is really very special to me because this was gifted to me by my mom. Okay. But this in comparison to this pen is a very normal pen to me. So for this pen, I'm going to write the word a, but for this pen, I'm going to use the word the. Okay. I hope the class is very much clear to you. In case you're having any problems, any questions, you can always give it to me in comment box. Thank you, class. It was really a nice day talking with you all and giving you a live session on English. Thank you, everyone. Thank you, everyone. And yes, don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.